So next, I want to talk to you about a slightly scary part of building a website when you don't have full-time employees. That is to find freelancers, people in remote locations, to find them, to find the right person and work with them remotely. It is tricky. Anyone who has done that, I think we all have our shared experiences of nightmares and truly bad experiences when a developer either he's not taking your call, the client wants some certain thing to be implemented as soon as possible, or something has gone down, uh, या फिर आपको developer की ज़रूरत है and you want him to troubleshoot either the developer वो आपको overcode कर रहा है because you don't understand technology, वो आपको estimates ठीक नहीं दे रहा, या फिर he is not professional, he cannot communicate, he cannot understand, he does not understand technology. Maybe उन्होंने experiment करने के लिए आपको आपका project को yes कर दिया and then he is not able to figure out. So it can be all sorts of nightmares. One of the nightmares I can think of was working with a Shopify developer who was in Delhi. I and it was my first experience with Shopify when one of my client who read my article, she was in Dubai, and she contacted me saying that I have a Shopify store. Can you implement it? And she said I've already implemented the theme, which was a theme forest. A theme she purchased from Theme Forest. I've already implemented, but the only thing I cannot fix is the currency selection. And then she came to me, and I did not have anyone. I checked with one of my friend who was doing my development, whom I truly trusted, and he said he has a friend in Delhi who knows Shopify, and you should get in touch with him. तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरा शॉपिफाई का जब प्रोजेक्ट लेके वो बैठ गया, कहते आप मैं आप करेंसी कन्वर्टर ठीक कर दो क्या इनका, कहते हैं हाँ जी कर देंगे, आप कितना चार्ज करोगे. आई थिंक ही गिव मी एन एस्टिमेट ऑफ 10 hours. आई थॉट फेयर इनफ, हो सकता है कुछ ज़्यादा टेक्निकल वर्क हो, कोई बात नहीं, डू इट. अब उस करेंसी कन्वर्टर को ठीक करने के लिए उन्होंने कोड में चेंजेस किए, जिससे कि पूरी जो उनका थीम थी पूरी थीम हिल गई. एंड देन जो काम मुश्किल से एक दिन का, आई थिंक फॉर समवन एक्सपीरियंस, आई थिंक वो एक्सपीरियंस हु अंडरस्टैंड शॉपिफाई उनके लिए काम आधे घंटे का था. ही टुक 10 hours, एंड आफ्टर 10 hours ही मेड सम चेंजेस, कस्टमाइजेशन, जिससे कि वो थीम थी वो अनस्टेबल हो गई. एंड देन आई वॉज इन अ सिचुएशन व्हेन द क्लाइंट, उन्होंने अपना स्टोर लॉन्च करना था, उनका पूरा मार्केटिंग रेडी था, बिकॉज उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी बात कर रखी थी, एंड उनका सारा शिपमेंट आ चुका था. शी वांटेड टू सेल एज सुन एज पॉसिबल. एंड this client was a lady and who was a housewife, very ambitious lady. I think her store now is doing exceptionally well, and thank God I still have her as my client. And उनकी वजह से मेरे पास दुबई में और भी clients आए, but the situation got really ugly in those days because she was after me कि why is this is taking so much time. And मैं उनको क्या बताता कि मेरे जो प्रोग्राम ने चेंज किया उसकी वजह से आपकी पूरी थीम अनस्टेबल हो गई है, एंड आई डोंट हैव एनी वन whom I can go to and resolve the issue. And then the guy वो ना वो कम्युनिकेट करते थे, वो मुझे ओवर चार्ज कर रहे थे. उन्होंने मुझे बोला कि जो शॉपिफाई की थीम है इसमें इशू है एंड वी कैन नॉट फिक्स इट. आई मीन आई कैन फिक्स इट बट इट इज़ गोइंग टू टेक मोर टाइम. तो एक जो काम हाफ एन आवर का था उसको करने में ऑलरेडी एक हफ्ता लग चुका था. And karte karte, you won't believe it, he took around 10 days making changes in the site. And at last बोलते कि ये नहीं हो सकता, इस थीम ये थीम सपोर्ट नहीं करती इस टाइप की करेंसी सिलेक्शन को. एंड आई नो वे टू गो बिकॉज जो वेबसाइट थी उनकी क्लाइंट की, वो मेरे पास जिस सिचुएशन में थी, इट वाज इवन एट अ वर्स. एटलीस्ट पहले करेंसी कन्वर्टर काम नहीं कर रहा था, अब उनके और 2-3 चीज़ें काम नहीं कर रही थी वेबसाइट पे. एंड आई डिड नॉट नो वेयर टू गो. एंड this guy had he sent me an invoice after 10 days that I've spent so much time working on this, and I think he invoiced me around 25,000 rupees for 10 days of work, which he said कि मैंने इसमें time ज़्यादा लगाया, but I'm only going to charge 25,000 rupees, which I thought was really unprofessional. And then he said he even emailed me कि he'll I told him that you're invoicing me too early and you haven't fixed the issue. इससे client को नुकसान ज़्यादा हुआ है. And he said कि मैं आपको he even threatened me that he'll sue me if I don't pay.
and I was in such bad mess. तो एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू बिकॉज क्लाइंट वहाँ से बहुत ज़्यादा पैनिक था, यहाँ से मैं पैनिक था, यहाँ से डेवलपर भी पैनिक था कि 10 दिन में काम कर चुका हूँ एंड दिस गाय इज सेइंग दैट ही कैन नॉट पे मी और ही इज़ नॉट पेइंग मी. आई हैड नो इंटेंशन ऑफ नॉट पेइंग हिम बट आई couldn't pay him from my own pocket. मैं क्लाइंट से इन्वॉइस करता, क्लाइंट मुझे पे करते, उसमें से मैं उनको पे करता इवन इफ इट वॉज फॉर 10 days. अगर वो उस चीज़ को काम को कर दे तो आई टोल्ड हिम दैट आई कैन नॉट पे यू फॉर दिस. And then I spoke to the guys who built the theme. Thankfully, before giving up, I called the development team who built the theme on Theme Forest. They were based in Vietnam. I found their website. I gave them a call, asking them that this is the situation I'm finding myself in. The currency converter is not working. The developer whom I hired is not sure if this feature is supported by you. Can you find me the best solution? And this guy, the makers of the thing, he said, okay, let me just send me an email and I'll assign to it my team and we'll see what we can do. तो मैंने उनको email करी. You won't believe, within half an hour they get back to me saying that okay, we have fixed this. The guy you hired actually broke the theme. He made some changes. I don't know what, but they could fix the issue in half an hour. It did not take them more than 30 minutes to fix it. And I presented the changes to the client and I sent the email thread in which this guy explained what all things he did wrong with the code. I showed this to the this designer the developer had hired in Delhi. So it was a total mess. Eventually I did pay him for some work. I did not pay him 100%. I did pay him 50% still because he had spent time. But I got really scared with that experience working with him because he was unprofessional. He did not, he couldn't communicate with me, and he wasn't competent. He just said yes to something he couldn't do. So a total nightmare. It was very stressful for me. It was very stressful for the client, especially for the client. And so I I don't want to scare you by showing you this scary image and telling you about my scary experience. But what I want to communicate to you and I want you to understand is that it is tricky. Working with freelancers is tricky. What you need is the right mindset to find the right people, and you might have to test your association with a lot of people before you can find the right person whom you can work with. So working with a freelance developer can be a nightmare, and it's not a long term approach. आप हमेशा freelancers के साथ काम नहीं कर सकते. There has to be a time when your company and your revenues are enough that you can start hiring people full time on salary basis. So that आप ऐसा ना हो कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं एंड यू वांट टू देम टू बी slightly more answerable to the work that's assigned to them. वो ऐसा ना बोले कि नहीं, I don't have bandwidth, I have other projects to do. You need, for key positions especially, at least you need a few full-timers in the longer run. But to start with, you can do what I have done. Eventually I managed to build a great team that I can completely trust, and my clients trust me for that. So it has worked out well for me, but I still know that I do realize that it is not a long-term solution even for me. Eventually I'll need more full-timers if I want to run this as a professional agency. So in the long term, try to hire full-time developers if you want to grow the consultancy's development wing. Be very careful in selecting freelance developer. Freelancers have tendency to underquote and underdeliver, and they might be working with dozens of clients at the same time. खासकर जो freelancers कम चार्ज करते हैं, जिनका hourly rate 10 है, $5 है, तो आपको अच्छा लगेगा कि देखो कितना cheap developer मिल गया. I'll be making a lot of money with the project because मैंने client को इस project को $40 में, $35 में बिल कर रहा हूँ, and this guy is only charging me $10. लेकिन imagine at $10 he'll not be working with just you. He will be working with multiple clients like you, so he might be working with 10-15 clients at the same time, and then आपको जो bandwidth support आपको shared मिलेगा.
तो आप उनको ज़्यादा आंसरेबल भी नहीं ठहरा सकते बिकॉज यू आर नॉट पेइंग देम इनफ. एंड सो it is very tricky. I'll give you my thoughts on how to work with freelance developers. So if hiring on a work, only work with a highly rated developer. आप ratings check करो, उनका portfolio check करो, जो अच्छे हों उन्हीं के साथ आप काम करो. आई लाइक टू अवॉइड एजेंसीज बिकॉज एजेंसीज के साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है. एजेंसीज में डिफरेंट टच पॉइंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, एंड दे आर वर्किंग विद मल्टीपल टीम्स. सो आई डोंट वर्क विद कंपनीज कंसल्टेंसीज, आई ओनली वर्क विद फ्रीलांसर्स जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं. एंड मैं उनकी रेटिंग्स ज़रूर देखता हूँ कि लास्ट रेटिंग उनकी एटलीस्ट 4+ हों. Anyone below that, I really don't want to take any chance because I'm happy paying them a premium rate. जो मुझसे जितना भी hourly rate कहते हैं, never negotiate it with them. वो जितना बोलते हैं, I make it very clear. I tell them कि जितना आपको चार्ज करना है आप करो, मेरे को अपनी पॉकेट से नहीं देना है. I want you to make money on this project, but whenever I need you, you should be there. मेरे को आप ये नहीं करना कि आप क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कम्युनिकेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो. आई डोंट वांट दैट. इफ़ यू वांट, चार्ज मी मोर. मैं क्लाइंट को उतना बिल कर दूँगा, मेरा क्लाइंट पे कर देगा. बट आई वांट योर dedicated attention to the project once you're doing it, and I want to work with you in longer run. Next, question their portfolio to make sure they actually built the site. जो अपना सैम्पल वर्क आपसे शेयर कर रहे हैं वो वेरीफाई करना पड़ता है बिकॉज अक्सर जो अपवर्क पे आपको डेवलपर्स मिलेंगे वो किसी और के वर्क को खुद का आप क्लेम करते हैं. तो फील फ्री टू क्रॉस क्वेश्चन कि आपने इसमें एग्जैक्टली क्या डेवलप किया है, एंड आस्क देम स्पेसिफिकली कि क्या ये वेबसाइट आपने अकेले बनाई है. वो कहते हैं नहीं, मैंने टीम में बनाई थी. तो व्हाट वाज योर रोल, हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू डू दैट, कितना टाइम लगा उसको बिल्ड करने में. जस्ट नोटिस वो कहते हैं कॉन्फिडेंटली वर्क को प्रेजेंट करें. अगर कहीं से भी आपको लगता है कि ये इन्होंने बिल्ड नहीं किया है या फिर उसमें ज़्यादा इफ एंड बट आ रहे हैं उनके, एंड इफ़ यू फील लाइक यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, तो जस्ट don't work with them because you'll find people who will do that, especially on Upwork. Next, share the scope of work and sitemap number of pages to take the quote. जब आप quote लो तो उनको अपना scope of work पूरा दिखा दो कि आपने ये सारे काम करने हैं. साइट मैप में जितने भी पेजेस हैं उनको होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट पेज, कार्ड पेज, सारे पेजेस बता दो आप कि इतने पेजेस हैं तो आप कोट मिलेगा. अदरवाइज़ आपको बाद में कोई भी एडिशनल कोई पेज रह जाता है आपके एंड से तो ऑब्वियसली ही चार्ज यू एडिशनल विच इज़ देयर, जिसमें कुछ ख़राब नहीं है. एज जस्ट दैट यू शुड बी ऑन द सेम पेज विद द डेवलपर. लीव नथिंग इन द ग्रे एरिया, पुट एवरीथिंग इन एन ईमेल. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट. मेक इट वेरी क्लियर टू द डेवलपर दैट ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप. उनको क्लियरली बता दो कि टेस्टिंग आपने करनी है, टेस्टिंग आप नहीं करोगे. उनसे आपने ये बोलना है कि आप मुझे जो वर्क दोगे एज इट इज़ मैं क्लाइंट को दे दूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट इट बिकॉज दैट्स नॉट माई जॉब. कोई भी बग मिलता है तो आपको अपने एंड पे फिक्स करना है. डोंट लेट द बग कम टू मी. अदरवाइज़ क्या होगा, वो हल्के हल्के आपसे कहेंगे अच्छा मैंने कर दिया, चेक करना. तो आप फिर बहुत जल्दी टेस्टर बन जाओगे उनके. तो यू आर वर्किंग फॉर देम इन अ वे, एंड उनको एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है कि आपने टेस्ट नहीं किया था. तो आप उनको बोलो टेस्टिंग मेरा काम नहीं है, आपने कम्प्लीटली टेस्ट करके मेरे स्पेसिफिकेशन जैसी मैंने आपको दी हैं वैसे करके आपने मुझे देना है. एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट इट इवन दो आप उसको टेस्ट करोगे. ऑफ कोर्स क्लाइंट को भेजने से पहले आपको टेस्ट करना ही होगा कि उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने कर दिया है, हैव दे एक्चुअली डन इट. बट होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर टेस्टिंग. Then tell him about your communication expectations clearly, him or her. I mean, आप स्काइप पे चैट करेंगे, आपको वीकली अपडेट्स मिलेंगी. आप उनको एक चीज़ क्लियरली बोल दो कि कभी भी अगर आई विल ऑलवेज अवॉइड कॉलिंग यू ऑन फोन. I'll stick with the email and Skype as a communication channel, but if there is anything urgent, I expect you to take my call. Of course, I'll not disturb you on Sundays, but I'll only contact you if there is any urgent situation. तो अपने एंड पे भी ध्यान रखना है. आपने कभी भी ऐसे एक्ट नहीं करना कि कोई चीज़ अर्जेंट नहीं है एंड हर चीज़ पे अर्जेंट लिख के उनको भेज रहे हो. डोंट क्रिएट फॉल्स अर्जेंसी जस्ट टू मेक देम, जस्ट टू प्रेशराइज देम. तो अपने क्लाइंट उनके साथ नहीं करना बिकॉज यू वांट देम टू ट्रस्ट यू. फॉर एग्जांपल माय टीम ट्रस्ट मी,
कि मैं अर्जेंट वर्क बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ. एंड सो इट हैज़ अ मीनिंग फॉर देम. दे थिंक कि अगर पुलकित ने बोला है सब्जेक्ट में कि अर्जेंट है या कॉपी में अर्जेंट लिखा है, ये मैंने ऐसा वर्ड यूज़ किया, एज सुन एज पॉसिबल यूज़ किया, दैट मीन्स ही रियली वॉन्ट्स इट सूनर. अगर मैं हर चीज़ में अर्जेंट, हर चीज़ में एज सुन एज पॉसिबल कर दूंगा तो इट विल लूज इट्स मीनिंग. And I try to not assign them any work on Saturdays and Sundays. I only work from Monday to Friday. तो मैं डेवलपमेंट टीम को सैटरडे संडे वर्क असाइन नहीं करता. तो अगर कभी मेरे पास कोई अर्जेंसी आ जाती है, इफ़ अ क्लाइंट फाइंड्स अ बग ऑन द साइट and there's a lot of traffic on the site on Sunday and I have to call my developer, so in that case I let him know that I'll try my best not to contact you, but if I have to, I'll pay you for that work. But you have to ensure कि आप e-commerce जैसे business में you'll provide me the support, and if not even then just at least take the call and let me know if you can do it. If you cannot, मैं client को बता दूँ. The point is कि client should know whether you can deliver it, and if not, when you can deliver it. And this thing only the developer can tell you. So it's important that you set the communication expectations right in an email. उनको आपको ये चीज़ पहले ही बता दो, क्लियर कर दो कि आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हो. Agree on an hourly rate for additional work. Goes without saying. उनका जितना भी hourly rate है, don't try to negotiate with them too much until आपको लगता है कि they are charging too much. If they are charging anything around $15 an hour, anything less than $20 an hour, I think India में it's acceptable, because आप अपने client से $40-45 charge कर सकते हो. And a client actually आपको hourly rate pay नहीं कर, and you don't have lot of options to choose from. Clients आपके पास थोड़े कम हैं, and in that case आप मुझे negotiate कर सकते हो. Go $15 तक जा सकते हो, but don't negotiate with them too much. उतने में काम करो जितने में वो खुशी खुशी आपके साथ काम करते हैं. It's very very important, because with my team I have a very close relationship with all my team members. उनको मैं कभी फील नहीं होने देता. I tell them that I'm not your client. We are a team, so don't talk to me like I'm your client. We are a team. I'll take care of you, but we have to work together. And communication बड़ा important हो जाता है ऐसे केस में. So that's why I want to work with only the like-minded people I can just sit with and have a beer or a coffee with. मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ. Anyone whom I cannot connect with, जिनको मैं trust नहीं कर पाता for any reason, अगर मैं trust नहीं कर सकता, I'll not work with them. It's as simple as that. So how I found my Shopify developer. अगर आप ये वाला फेस से देख के थोड़ा डर रहे हो, my Shopify developer and none of my team members like that. ये सिर्फ वो बंदा है जो मेरे साथ दिल्ली में काम किया था. He might be this guy who really scared me. But then my current team that I'm working with, I'm so fortunate to stumble upon some really like-minded good people, including the guy in question जो मेरे current developer हैं, जर्मनजीत सिंह संधू. इनसे मैं अब वर्क में मिला था. इनका नाम जर्मन है. He's a very interesting guy, and I share the story with everyone. I'll briefly share that story with you. So I had a project that I wanted a Shopify developer for, because I was committed that I want to work in this platform. So I created a gig on Upwork that I'm looking for a Shopify developer, and then a girl contacted me, a girl who had a pretty profile picture posted, and she contacted that I am a Shopify developer, I'd like to apply for the job, and she sent me a list of work samples. तो मैंने वर्क सैम्पल्स देखे. वर्क बहुत कंपेलिंग था, काफ़ी सारे वर्क सैम्पल्स थे, एंड द पोर्टफोलियो वाज टू गुड टू बी ट्रू. मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ लोचा हो सकता है. तो आई आस्क्ड हर कि कैन वी गेट ऑन अ स्काइप कॉल, आईड लाइक टू डिस्कस दिस योर पोर्टफोलियो विथ यू. एंड आई ऑल्सो नोटिस कि शी इज़ बेस्ड इन चंडीगढ़. आई थॉट it will be easier for me to communicate if I can find someone who's a Shopify developer in my city. It'll be easier for me. So I asked her कि can we get on a call. She said yes. Let's get on a call. On Skype में मुझे ऐड किया. Then she जब call start होने वाली थी, suddenly she said कि do you mind if you talk to my husband. I thought okay. I thought this work was yours. तो कहती नहीं we work like a team. So maybe you can talk to my husband. I handle the sales and आप अपने husband से बात कर लो. I thought okay. तो अब कॉल पे आए. तो कॉल पे आए जो मेरे डेवलपर हैं जर्मनजीत सिंह संधू. इनसे मैंने डिस्कशन किया. तो प्रॉपर जट बॉय हैं ये. इन्होंने अपना पूरा वर्क सैम्पल समझाया कि मैं ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ. उन्होंने एंड ही गेव मी कॉन्फिडेंस कि इन्होंने सारा काम इन्होंने खुद किया है,
एंड आई डिड नॉट हैव मेनी ऑप्शंस. आई थिंक अभी तक जितने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया था सबसे अच्छा पोर्टफोलियो इनका था, एंड आई डिसाइड टू गिव हिम अ गो. तो मैंने इनको प्रोजेक्ट पे काम किया. पेमेंट टर्म्स ने जो जो कहे मैंने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया. मैंने इनको एक ही बात बोली थी, दैट आई वॉन्ट टू वर्क विद अ प्रोफेशनल. आपसे मैं बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करूँगा, जितना आप कहोगे मैं आपको उतना पे करूँगा. आई जस्ट नीड गुड वर्क एंड गुड कम्युनिकेशन, एंड आई वॉन्ट टू वर्क विद समवन इन द लॉन्गर रन. तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, हमने काम किया, एंड ही डिड सम अमेजिंग वर्क. उनका कम्युनिकेशन कमिटमेंट लेवल बहुत अच्छा था. एंड हमारा प्रोजेक्ट जो फर्स्ट था, वी डिड द प्रोजेक्ट टुगेदर, एंड जितने टाइम फ्रेम पर उन्होंने कहा उससे जल्दी डिलीवर कर दिया. एंड वर्क क्वालिटी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस वर्किंग विद many developers, including some of my friends, was terrible. And this guy really stood out. And then project khatam hone ke baad, we decided, okay, let's catch up for a beer. Let's celebrate our first project launch, because it was decent sized project. तो हम लोग मिले, and to my surprise, जर्मन जब आए तो अपनी वाइफ, तो उनकी एक्चुअली गर्लफ्रेंड थी, तो वो दोनों, तब उन्होंने शादी नहीं हुई थी, नाउ दे आर मैरिड. तो वो दोनों आए, एंड देन दिस गाय वाज अनलाइक व्हाट आई हैड इमेजिन. उनके इतने बड़े बड़े बाइसेप्स, बिल्कुल बॉडी बिल्डर लग रहे थे. एंड ही वाज द लास्ट गाय इन दैट बार जिसको मैं इमेजिन करता कि ही इज़ जर्मन, बिकॉज ही लुक लाइक अ बॉडी बिल्डर, जैसे बाउंसर्स होते हैं नाइट क्लब्स में, बिल्कुल वैसे लग रहे थे. एंड देन ही इंट्रोड्यूस कि मैं जर्मन हूँ. आई वॉज सो शॉक्ड. एंड आप उनसे कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते कि ही इज़ अ डेवलपर. सो you meet people, you meet interesting people, and he's a gem of a guy. अब उनके साथ मैंने आई थिंक जितना भी Shopify डेवलपमेंट किया, आई थिंक ही इज़ द गाय. ही हैज़ हिज टीम नाउ. He has also grown as a developer. But it's a great story because I have a very special bond with him. He's a good friend now, and someone I can really bank upon for all my web development work. Um, so that's a small story. So what I want to tell you that don't get scared, because अगर आपको एक दो लोग अच्छे नहीं मिलते, there are plenty of good people you can find on Upwork, online, remote culture आपका बहुत अच्छा बन सकता है. उसके बाद I have not employees, my team members in Mumbai, in Delhi, Chandigarh maybe I have more team members. I have people in Bangalore, I have them in Spain, and I have them in US, and in UK as well. So I've developed some really good relationships and a really good workforce जो कि एक्चुअल स्पेशलिस्ट बन गई है फैशन में. फॉर एग्जांपल केटी, उनके साथ मैंने कॉपी राइटिंग का जब काम शुरू किया था, आई वॉज फाइंडिंग कॉपी राइटर्स फॉर एक्चुअली अ क्लाइंट, बट देन ही रिजेक्टेड हर. बट आई लाइक हर वर्क बिकॉज शी वॉज वेल ट्रैवल्ड, पूरा यूएस उन्होंने घूम रखा था, एंड उनकी कॉपी राइटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल थी, बहुत सिंपल वर्ड्स में हर चीज़ अपनी स्टोरी सुना रहे थे. तो आई कॉन्टैक्टेड हर, आई सेड दैट आई रियली लाइक योर वर्क, and I have I'm a fashion focused, we are a fashion focused marketing studio, and all our clients are based in the US. So if there's anything we can do to work together, I'd love to work with you. She immediately agreed because she wanted more work. So I asked her for her picture and her bio. उन्होंने अपना bio भेजा, about page पे मैंने डाला, and नॉट वेरी लॉन्ग आफ्टर दैट हमारा मेरी जो साइट थी फैशन कॉपी राइटिंग के लिए रैंक करनी शुरू हो गई थी. एंड वी स्टिल गेट लॉट ऑफ इंक्वायरीज फॉर फैशन कॉपी राइटिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग Swarovski एंड सम रियली बिगर नेम्स कॉन्टैक्टेड अस फॉर कॉपी राइटिंग. तो इन सब के साथ मैंने तो केटी इज़ अनदर एग्जाम्पल. अब उनका पहले इतना फैशन फोकस नहीं था, अब उनका फोकस कम्प्लीटली ऑन फैशन हो गया है. शी इज़ समवन आई कैन रियली रियली ट्रस्ट ऑन फॉर कॉपी राइटिंग वर्क. उनका कोई भी वर्क क्लाइंट से नेवर गेट्स रिजेक्टेड, एंड वो सेल्स भी हैंडल कर लेते हैं. अक्सर मैं उनको क्लाइंट विजिट से भेजता हूँ कि आई हैव दिस इंक्वायरी, कैन यू हैंडल इट, एंड शी इवन गोज टू मीट दोज क्लाइंट्स. तो यू विल फाइंड गुड पीपल, यू जस्ट हैव टू पेशेंट, यू हैव टू ट्रस्ट पीपल, allow them to break your trust and learn from it, optimize your finding process to hire new people, to find new people, and keep on trying new people. So don't think that there are not enough good people around you. This is how you build your team. Okay, enough about team building. Let me talk about Shopify support. If you face any problem during the development, chat with the Shopify people, and they're helpful in resolving most kinds of development issues. आप उनको कॉल भी कर सकते हो. Most convenient ways to chat with them. They have their people in every time zone.
तो अगर आप अभी चैट करना चाहते हो तो इट कनेक्ट यू विद समबडी सिटिंग इन Singapore or even Vietnam, but they are competent smart people who will happily help you out, and they are good with escalating issues. कुछ उनसे अगर नहीं होता तो they always get back to you. So Shopify support is one of the greatest factors. One more tip: make sure you sign up for a Shopify partner program, just like I did. For example, if you click on Shopify.com, let me open this link for you. सो shopify.com पे आला फैशन रिटेल का एक पेज बन रखा है, एंड इससे कोई भी तो व्हाट हैपेंस इज इफ client contacts me and they ask me that let's get started, I tell them that since we are Shopify partners, you can apply for a discount. Use this link to sign up, and you'll get I think yes, this is the offer, 10% discount they get on their monthly membership for 1 year, which is a good offer, and extended trial, which is a 21 day trial. I think otherwise 13 days का होता है. आप अगर जो मेरे क्लाइंट्स इससे करते हैं उनकी जो बिलिंग होती है फिर 21 डेज बाद स्टार्ट होती है, तो ये एक एड ऑन बेनिफिट मिल जाता है. तो ऑल माई क्लाइंट्स हैप्पीली रजिस्टर यूजिंग माई लिंक, एंड व्हाट दैट डज कि वो जो भी परचेज करते हैं उसके बाद it gives me Shopify gives me a 200% commission, which is again an additional source of revenue. क्लाइंट को भी कुछ इनकम हो जाती है, मुझे क्रेडिबिलिटी मिल जाती है Shopify पार्टनर होने की, एंड आई गेट टू मेक सम affiliate कमीशन फ्रॉम इट. So next, what if a client has a bigger budget and wants to develop a site in Magento? अगर कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है जो कि उनका प्रोजेक्ट Shopify में नहीं हो सकता, and they are adamant they want to work with me because I'm somebody who's specialized in fashion, and happens with me all the time when a client says I don't want to work with anyone else, but I wish you could handle our project. In that case, I have partnered with a local agency, which is a big agency in Chandigarh. उनको मैं Magento development का work अपना भेज देता हूँ, and they pay me a handsome commission for it, because unko it's work for them. So I mean, most development companies they happily pay incentive to someone who can get them new project. So this is how I make money on the projects I cannot handle because I don't have the bandwidth. अगर उनका जो typically ticket size is, if it's more than $10,000, I don't do it in house, I outsource it. In that case, agar so I have partner development companies jinko main, but again it's very very important, I only outsource my work to companies who are okay for having me to let me stay involved in the project. I don't want to be kicked out of the project after outsourcing, because my biggest concern is the client, that मैं किसी भी XYZ company को नहीं करता. I outsource this work to this company because I trust them. I know that they are really good. They're very ethical people. They are good people, and they have a competent team. They have the infrastructure, and my client is safe in their hands. So it's not about money. It's just I know for sure, I'm confident that this company can handle this client and really make him happy. So I do that. So if you ever consider outsourcing a project to a client, first be very transparent about it. I don't pretend that you are executing project and the backend some other company is executing the project. I tell my clients that we cannot handle this, but we have a partner company. They are really good at their work, and I'll stay involved in the project. I'll stay in the loop throughout, and I suggest you work with them, talk to them, and if you like them, I suggest you just work with them. Of course, I don't tell them that this company is going to pay me commission, because ये मेरा उनसे terms है. But यहाँ पे जो deriving factor है, it is not money. It is a genuine confidence that I have on this local company, that they are good at what they are doing. They really know Magento and e-commerce very very well, and they'll take good care of the client. तो इस वजह से मैं करता हूँ, and I get commission for that work.